3 mark selection question. Yesterday we had a discussion on the question that's a probable question of the prose, my greatest Olympic prize. Today I've taken a poem, a psalm of life, one of the most important poem you can say, in view of your board exam 2022. So let's have discussion on some of the questions that are, you can tell, important questions. Swagatika. God bless you, beta. Shivani Jai Jagannath. So the first question today I've taken is, what exactly dost thou art to dust thou returnest? What is there? Dust thou art to dust thou returnest. Explain the question. What do you mean by dust thou art, dust thou returnest? Write down the question. This is the question. तो पिले यही क्वेश्चन टाको एक्सप्लेन करवा पूर्व बिफोर एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द क्वेश्चन दिस प्रेज दिस इज ए लाइन फ्रॉम द पोएम ए शैम ऑफ लाइफ व्हिच वाज रिटन बाय H.W. Longfellow. Remember this. And whenever you are answering a question that is especially western poem, whenever you are answering a question that is especially western poem, remember you are to introduce the author. एठी author होचंती H.W. हेनरी वार्ड्सवर्थ. बहुत पिला भूल करंती ताकू वर्ड्सवर्थ बोली कहंती, विलियम वर्ड्सवर्थ, but Henry Wadsworth, Wadsworth. Remember this first of all. So, and he was an American poet. Let me introduce the poet. He was an American poet, was born in the year 1807, died in the year 1882, if I'm not wrong. Yeah, I think so. 1882. And he was the poet. He was the first citizen. He was the first citizen of United States of America who was being, honored at the Poet Corners of Westminster Abbey in London. London ro Westminster Abbey ro Poet Corner thare तांकु सम्मानित करा जायथिला फर्स्ट सिटीजन हिसाब रे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नहीं, आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. मुझे जदि भूल कही नहीं. And William Henry Wadsworth Longfellow was not only a poet, not only a poet, but was also an educator. Nahi? So this is what we call the introduction of the poet. ए विषयरू गोटे धाड़ी दुई धाड़ी लिखिदेले सफिशिएंट. वर्तमान रहिला प्रश्न थिला मोर that dost thou art to dust thou returnest. एठी पिले मन रखिबा अल्लाहु अकबर अहमद. Okay, so what happens here? Look at this. Dust thou art to dust thou returnest. Eti though someone has asked me, walaikum salam. So someone has asked me eti kon pacharla se though kahile kona. Though means though stand for you. This is what archaic use of English. This is called old English, puruna English. A puruna English, old English जेतला आमे जिवा शेक्सपियरियन is शेक्सपियरियन लिटरेचर सब देखिबा जेते बेले जय महाकाल तो सेठरे लिखा हुए दो दी, these are the words that are used. दो stand for you. That means dust दो art, ART art. आर्ट कहले बहुत टीचर मु सुनिछि ताको कला बोली कहंते, स्किल बोली कहंते, बट आर्ट इज नॉट आर्ट हियर. आर्ट स्टैंड फॉर आर, ARER. That means you are dust and you will return to the dust. और आमे जदि ब्रॉडर सेंस रे जिबा, ब्रॉडर सेंस रे जदि जिबा एटा होची लाइफ हैज कम फ्रॉम डस्ट. लाइफ हैज कम फ्रॉम डस्ट and you will die. Means people will return to the dust. This is the meaning exactly. Getting me? This is the meaning. So if you'll explain, you can say here in this sentence Henry Wadsworth Longfellow wanted to convey a meaning that life by quoting a phrase from Bible, a line from Bible, that whatever written in Bible, like life has come from dust and it will return to the dust. It is not spoken about what soul. It is completely spoken about our physical body only. केवल शरीर विषय कह जाइछि. एटा का विषय कह जाइनि, एटा आत्मा विषय कह जाइनि, मनुष्यर कर्म. आत्मा तो नुह, मनुष्यर कर्म विषय कह जाई नाही.
ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्न कौन पिले परवर्ती प्रश्न होची एक्जाक्टली बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ एक्सप्लेन इट इज एन इंस्पायरिंग कॉल ऑफ द पोएट हाउ बी ए hero in the stripe alternative english ର pattern will be same as compulsory english ml english ठीक अछि पिला तो पिला देखो बी ए हीरो इन द स्ट्राइप कौन लिखा है बी ए हीरो इन द स्ट्राइप से स्टांजा टा मने पकेबा in the world's broad field of battle in the bivouac of life let not be dom driven cattle be a hero in the stripe this is the stanza mane rakiba yeah in the broad field of battle in the bivouac of life let not be dom driven cattle be a hero in the stripe this is the stanza मन रखिबा सो कौन हुए पिले एठे लिखा है जे पृथ्वीटा गोटे युद्ध पड़िया जीवनटा एक बाइबक मुक बधिर भलिया न होई मनीष भलिया काम कर नाइ दिस इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन सो यू कैन से बी ए हीरो इन द स्ट्राइप द स्टांजा itself is an inspirational stanza for human beings and it's convey clear message that we must fight the battle of life जीवन और युद्ध situation will be there yes situation will be there and this situation are changeable situation सब बेले change हुए and we are to work according to the situation we mustn't lose our hope while facing a difficult situation we mustn't be afraid of such situation that has disastrous effect in our life and we must face all the situation with solemn heart this is the answer we have to write next question let us go to next question पिले कम समय भितर बहुत प्रश्न आलोचना करिवार अछि दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट टिके स्पीड जाउछि वर्तमान एटा रिवीजन सेक्शन रे आ आमे जदि धीरे धीरे पढिबा गोटे गोटे वर्ड करी मु बुझेइबी टिके बहुत बहुत समय लागो नेक्स्ट प्रश्न होछि why had the poet preferred the present to past and future why had the poet preferred the present to past and future कवि काहेकि पास्ट एवं फ्यूचर रु प्रेजेंट को प्रिफर करिसंती सो स्टांजाटा कोन व्हाट इज द स्टांजा मने पकेबा स्टांजा लिखाई छी ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्रेजेंट लेट द डेट पास्ट वेरी इट्स डेट ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्रेजेंट लेट द डेट पास्ट वेरी इट्स डेट्स and work hard within God is over it like this something is there तो ये लिखा है जी कौन जे फ्यूचर जेते भी प्लेजेंट हो फ्यूचर ऊपर भरोसा करो नहीं अतीतटा मृत जमती कादुओ को जदि आम कुदिबा ताले कौन हम पिले एक्जाक्टली कादुओ स्मेल हम गोड़ धोइबा पे पड़ो नहीं तो से जेहेतु पास्ट वेस्ट पेपर पास्ट विषय चिंता करी प्रेजेंट को नष्ट करवा नहीं एंड बिकॉज वी नो द प्रेजेंट वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट वी मस्ट वर्क इन द प्रेजेंट कारण आम वर्तमान रे जीउचे वर्तमान को जानुचे तेणु दैट्स व्हाई वी मस्ट वर्क इन प्रेजेंट वर्तमान री काम करी यू नो वी मस्ट फेस इट विथ फुल हार्ट हृदय सहित सामना करवा दरकार and we mustn't trust our future because we have not seen our future and we can't change our past. That's why we mustn't think about the past, and because we are living in the present we must work in the present. This is the message SW Longfellow wanted to convey the readers. This is the answer. जय जगन्नाथ रश्मि जय जगन्नाथ परवर्ती प्रश्न होची what does the poet compare our hearts to and why? What does the poet compare our hearts to and why? कवि आम हृदय को कहा सहित कंपेयर करिसंती एवं काहेकि नहीं आम कवि आम हृदय को कहा सहित कंपेयर करिसंती एवं काहेकि नॉट एंजॉयमेंट नॉट सरो कौन अच्छी से स्टैंडर्ड our heart funeral marches to the muffled drums are being beaten funeral marches to the grave mane rakhiba sei stanza ta mor mane paduni exactly that is the stanza funeral muffled drums are beaten funeral marches to the grave sei stanza duita line mane paduchi baki line mane paduni bile to exactly kon hichi je ethi our hearts is compared with muffled drums hruday ku muffled drums boli कहा जाइछि why reason kon रीजन हूँ
our heart is beating constantly. And with every beat of our heart, we are inching towards grave. Every beats of our heart, ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କନଭେ. ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ କୁହେରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଦେଖ. How dull we are. Not enjoyment and not sorrow is our destined end, but work that is tomorrow finds us farther than date. ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡା ଅଛି ପିଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି. ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ, କେକ୍ କାଟୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁନୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଗଲା. ଆମ ଜୀବନରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ ହେଇଗଲା. ଷ୍ଟିଲ୍ वी आर गेटिंग हैप्पी व्हेन एवर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर बर्थडे, वी आर गेटिंग हैप्पी. मूर्ख मनीष जापर ना जे गोटे वर्ष ता जीवन कम होगा से सेलिब्रेशन करुच्ची, मृत्यु को सेलिब्रेशन कराऊँ. येस और नो? थिंक इट सीरियसली एंड टेल मी. तो पिले मु कहूली कोटा प्रश्न थिला, व्हाट डज द पोएट कंपेयर आवर हार्ट्स टू एंड व्हाई? द पोएट हैज कंपेयर्ड आवर हार्ट्स. S.W. Longfellow in the poem A Psalm of Life has compared our heart with muffled drums. Yes or no? And why? The reason is that as we can't tolerate the death of our dear and near, that's why muffled drums are being beaten. Like that, our hearts is beating, and it with every beat, it is taking us inching towards death. मृत्यु आड़ को नहीं जाऊँ. That is the reason. Okay. जा परवर्ती प्रश्न कौन बिले? परवर्ती प्रश्न होची, लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? Life is an empty dream. What figure of speech is used here? जीवनटा एक फांका स्वप्न. एठी को फिगर ऑफ स्पीच व्यवहार हेची? Which figure of speech is used here? मन रखिया. So it is a metaphor. Metaphor कहले अलंकार. अलंकारिक व्यवहार. एठी जीवन एक सुस्थ जीवन को एक फांका स्वप्न सहित तुलना करा जाय अछि. सो दैट्स व्हाई यू कैन टेल इट इज ए मेटाफर. द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड इन द सेंटेंस लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम इज ए मेटाफर. सो बिकॉज इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग. दुईटा सिमिलर नुह, अलगा अलगा जिनसर कंपैरिजन जेते बेले हुए गोटे जिनस सहित गोटे इनानिमेट जिनस सहित गोटे एनिमेट जिनस को जो कंपेयर करा जाए ताकू मेटाफर बोली कहितो. आमे मेटाफर कहले अलंकारिक व्यवहार. ओके. नो विथ आउट एज एंड लाइक. केवल एज एंड विदाउट एज एंड लाइक यू कांट से विदाउट एज एंड लाइक. कमलाकांत एज एंड लाइक केवल व्यवहार ना जे मेटाफर हम सेमती किसी ना. देयर इज नो पर्टिकुलर रूल दैट विदाउट एज एंड लाइक ओनली मेटाफर इज देयर, हाइपरबोल इज देयर, एक्सैजरेशन इज देयर, and parody is there, melody is there, lots of figure of speech are there. So don't worry about all those things. परवर्ती प्रश्न, what does last question शेष प्रश्न आज आलोचना करिबा. एथिरो यस ए सैम ऑफ लाइफ रो शेष प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न आलोचना करिबा. तापरे क्लास टाको समाप्त करिबा. तापरे आमे जीवा 8:30 रे आमे आलोचना करिबा एग्जाम ऊपर. आज गोटे ट्वीट वायरल होची, से ट्वीट ऊपर चर्चा करिबा आज. तो कौन अच्छी, व्हाट डज द पोएट लॉन्गफेलो वांट टू टेल द रीडर्स अबाउट लेबर? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट लॉन्गफेलो वांट टू टेल द रीडर्स अबाउट लेबर? कवि एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो लेबर परिश्रम विषय रे कौन तांकर व्यू, व्हाट इज हिज व्यू ऑन लेबर? परिश्रम ऊपर कौन व्यू अछि तांकर? I want someone to tell me answer. Swagatika, better write down the answer first of all. I want to see your answer. Kamlakant, Kamla is also there. Lucky is also there. Varsha is there. Mani is there. So can you write work and wait for rewards? Niranjan, very good beta. Okay, work hard and wait for rewards. Yes. Okay. और किसी परिश्रम ही सफलता रो चाबिकाठी. पिंकू, okay. आउ किसी ताकू इंग्लिश रे कहिबा पिंकू. सो वी आर टू राइट इन इंग्लिश बेटा, हमको इंग्लिश रे लिखिबार अछि ना. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. सो आई वांट टू सी सम क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यू. ऑलवेज टू डू हार्ड वर्क, नॉट डिपेंडेंट आवर रिजल्ट, बिकॉज गॉड इज ओवरहेड. ओके बढ़िया कमलाकांत, बढ़िया.
So Ashish, okay. What is your answer? Can you write some answer for me? କିଏ କିଛି ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତମର ଆନ୍ସର ସବୁ ଦେଖୁଛି okay Naina, okay, the poet wants to tell to work hard and don't wait for results. God will always override. Okay, Swagatika, thank you for your answer. Thank you for your answer. I want some more answer. What do you understand from the text SM of Life, the poem? It is one of the most inspirational poem of all time in English literature. So what do you understand from that? What do you understand from the poem? Your teacher must have taught you inside the class. Stay hungry, stay foolish. We'll go for it. No problem. Tomorrow we'll stay hungry, stay foolish. Pile mone rakhiba story ro 3 mark based question asibo nai. So story ro 3 mark based question ame discussion kariba nai. E parikha pai story ru asibo nai. Non detail ro 3 mark based question asibo nai. Kebala prose poetry ru asibo. Gatakali mu tumako my greatest Olympic. And he also told that we should work in our living present, not in past or future. Okay, beta, very good. बहुत बढ़िया स्वागतिका. Thank you. Okay, so let me tell you my answer. So what happens? The view of H.W. Longfellow, about labor in the poem. What a Sam of Life is that riders are always hard work and God is here. Don't wait for the reward because we should do our art. Red eye, very good. Yeah, well explained, red eye. Thank you. आंदोलन स्टे हंग्री स्टे फोलिस रे क्यों क्वेश्चन आसीबो केवल एमसीक्यू आसीबो आंदोलन केवल एमसीक्यू आसीबो ओके तो लेट मी टेल यू आंसर तापर हम कथा हेला तो क्वेश्चन आंसर ता कोन लिखिबा व्हाट डज द पोएट लॉन्गफेलो वांट टू टेल द रीडर्स अबाउट लेबर अकॉर्डिंग टू द पोएट or according to S.W. Longfellow in the sensational poem A Sam of Life. He wants to tell the reader to work hard. And if a man or a student or a people or anyone will work hard, then he will get the result without any dilemma. They will get the result. They mustn't look at the fruit. They mustn't look at the result. They must wait. They must wait for the result. Because if you will work hard, you will get success. तमे जदि हार्ड वर्क करूछ तमे निश्चित भावे सफलता पाइबो. That's why केवल आमे काम करि जिवा दरकार. We must work hard. We mustn't look at the result. And God is watching our activities. Our activities are being watched by the Lord God. Our activity are being watched. आमर कार्य कलाप भगवान उपरे देखुचंती आ आमे जो भली कर्म करिबा आमे सेही भली फल पाइबा. जेमति इंग्लिश रे कहा होईची as you sow so shall you reap. As you sow so shall you reap. तमे जेमिति मंजी बुणीबो तम फसल भी से भलिया हबो. तो पिले आज सेम ऑफ लाइफ रो एतिकी क्वेश्चन थिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन एई भलिया आमे नेक्स्ट आसंता काली आउ गोटे चैप्टर ऑन एग्जामिनेशन के आउ गोटे चैप्टर नबा. मु तुमको कहिची माने कहिची वासुदेव पंडा वर्ड माय वर्ड इज वर्ड. मु खराब भाई बनी पिले मु गोटे कथा कहे माय वर्ड इज वर्ड डू नॉट इयाडे सियाडे. ठीक अछि मु एबडिया किछि कहे पिला माननको मोर क्लास रे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आसंता काली पुडी थर कथा हवा. ठीक अच्छे आसंता काली पुणी थर आलोचना करवा. बाय.